दिल्ली एमसीक्यू। आज हम लोग गायनेकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, गायनेकोलॉजी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लोग पूछ रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ऑफ पीआईडी एक्सेप्ट। तो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ऑफ पीआईडी आर ऑल एक्सेप्ट। Preventive mechanism of PID are all except option 1 intact hymen, option 1 intact hymen, option 2 alkaline vaginal pH, option 2 alkaline vaginal pH, option 3 epithelium of uterus, option 3 epithelium of uterus, या ऑप्शन 4 सर्वाइकल म्यूकस, ऑप्शन 4 सर्वाइकल म्यूकस। फिर से देखिए, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म ऑफ पीआईडी आर ऑल एक्सेप्ट इंटैक्ट हाइमेन, अल्कलाइन वजाइनल पीएच, एपिथेलियम ऑफ यूट्रस, सर्विकल म्यूकस। एंड द राइट आंसर इज बी। अल्कलाइन वजाइनल पीएच नहीं होती, एसिडिक वजाइनल पीएच होती है। अल्कलाइन वजाइनल पीएच नहीं होती, एसिडिक वजाइनल पीएच होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2, सीमेन एनालिसिस रिक्वायर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सटिनेंस। semen analysis require how many days of abstinence, how many days of abstinence, ठीक है ना। ऑप्शन 1 3 day, ऑप्शन 1 3 day, ऑप्शन 2 7 day, ऑप्शन 2 7 day, ऑप्शन 3 2 days, ऑप्शन 3 2 days, ऑप्शन 4 5 days, ऑप्शन 4 5 days। फिर से देखिए, सीमेन एनालिसिस रिक्वायर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सटिनेंस, 3 days 7 day 2 day या 5 day। एंड द राइट आंसर इज 3 2 days। द राइट आंसर इज 2 days। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Question number 3. Which of the following neurotransmitter play a key role in onset of female pubertal changes? तो neurotransmitter playing key role in onset of female pubertal changes. Female pubertal changes कौन सी होती है। ऑप्शन 1 लेप्टिन, ऑप्शन 1 लेप्टिन, ऑप्शन 2 किसपेप्टिन, ऑप्शन 2 किसपेप्टिन, ऑप्शन 3 न्यूरोपेप्टाइड वाई, ऑप्शन 3 न्यूरोपेप्टाइड वाई, या ऑप्शन 4 गाबा, ऑप्शन 4 गाबा। फिर से देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग की रोल इन ऑनसेट ऑफ फीमेल प्यूबर्टल चेंजेस इज लेप्टिन, किसपेप्टिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई या गाबा। एंड द राइट आंसर इज बी, किसपेप्टिन। द राइट आंसर इज बी, किसपेप्टिन। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ सीवियर डिस्मेनोरिया। तो कॉजेस ऑफ सीवियर डिस्मेनोरिया आर ऑल एक्सेप्ट cause of severe dysmenorrhea are all except option 1 uterine didelphys, option 1 uterine didelphys, option 2 transverse vaginal septum, option 2 transverse vaginal septum, option 3 unicornuate with no communicating horn, option 3 unicornuate without communicating horn,
Option 4, rectovaginal endometriosis. Option 4, rectovaginal endometriosis. Endometriosis. फिर से देखिए, cause of severe dysmenorrhea are all except uterine didelphys, transverse vaginal septum, unique coordinate without communicating horn या rectovaginal endometriosis. And the right answer is A. uterine didelphys नहीं होती है. uterine didelphys में तुम्हारी severe dysmenorrhea नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 पूछे, hobnail pattern is seen in which endometrial cancer? hobnail pattern is seen in which endometrial cancer? Which endometrial cancer? Hobnail pattern is seen in which endometrial cancer? Option 1, serous. Option 1, serous. Option 2, endometrioid. Option 2, endometrioid. Option 3, papillary. Option 3, papillary. Option 4, clear cell. Option 4, clear cell. फिर से देखिए, hobnail pattern is seen in which endometrial cancer? serous, endometrioid, papillary या clear cell? And the right answer is clear cell. The right answer is clear cell type में. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, what is the cause of incontinence in immediate post-operative period after hysterectomy? The cause of incontinence in immediate post-op after hysterectomy. The cause of incontinence in immediate post-op after hysterectomy. Option 1, bladder injury. Option 1, bladder injury. Option 2, urethral injury. Option 2, urethral injury. Option 3, overflow incontinence. Option 3, overflow incontinence. Option 4, stress incontinence. Option 4, stress incontinence. फिर से देखिए, cause of incontinence in immediate post-op after hysterectomy. Bladder injury, urethral injury, overflow incontinence, stress incontinence. And the right answer is A, bladder injury. The right answer is A, bladder injury. Question number 7 देखेंगे. Question number 7. All are used in treatment of infertility in PCOS except. तो treatment of infertility in PCOS are all except. Treatment of infertility in PCOS are all except. Option 1, ovarian drilling. Option 1, ovarian drilling. Option 2, clomiphene citrate. Option 2, clomiphene citrate. Option 3, gonadotropin. Option 3, gonadotropin. Option 4, spironolactone. Option 4, spironolactone. फिर से देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन पीसीओएस आर ऑल एक्सेप्ट ओवरियन ड्रिलिंग, क्लोमिफिन सिट्रेट, गोनाडोट्रोपिन या स्पाइरोनोलैक्टोन. एंड द राइट आंसर इज डी, स्पाइरोनोलैक्टोन. ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग ट्यूबेक्टोमी. तो ट्रू अबाउट ट्यूबेक्टोमी are all except. Option 1, most commonly used method of contraception in India. Most common contraception in India.
in India. Option 2, can be done up to 48-hour postpartum. Can be done till 48-hour postpartum. 48-hour postpartum. Option 3, most commonly done at isthmus. Most commonly done at isthmus. Most commonly done at isthmus. Option number 4, Assure is done hysteroscopically. Assure is done hysteroscopically. Hysteroscopically. फिर से देखिए, true about tubectomy are all except. Most common contraindication in India, most common contraceptive in India can be done till 48-hour postpartum. Most commonly done at isthmus. Assure done hysteroscopically. And the right answer is B. That is, can be done till 48-hour postpartum. ये गलत बात है. Cannot be done at 48-hour postpartum. It is most common contraceptive in India, most commonly done at isthmus and assured done hysteroscopically. Question number 9 देखेंगे. Question number 9. ठीक ना, which is function of estrogen? तो function of estrogen. Function of estrogen. Option 1, helps in secretory phase. Help in secretory phase. Option 2, increase cholesterol. Increase cholesterol. Option 3, increase serum calcium. Option 3, increase serum calcium. Yeah, option 4, relaxes smooth muscle and dilate blood vessel. Relaxes smooth muscle and dilate blood vessel. This is the function of estrogen. Helps in secretory phase, increases cholesterol, increases serum calcium and relaxes smooth muscle and dilate blood vessel. And the right answer is D. It relaxes the smooth muscle and dilate the blood vessel. Relaxes smooth muscle and dilate the blood vessel. Question number 10 देखेंगे. Question number 10. OCP are a risk factor for. OCP is risk factor for. OCP is risk factor for. Option 1, ovarian cancer. Option 1, ovarian cancer. Option 2, endometrial cancer. Option 2, endometrial cancer. Option 3, cervical cancer. Option 3, cervical cancer. Option 4, breast cancer. Option 4, breast cancer. फिर देखिए, OCP is risk factor for ovarian cancer, endometrial cancer, cervical cancer and breast cancer. And the right answer is C, cervical cancer. OCP is a risk factor for cervical cancer. ठीक है ना, OCP is a risk factor for cervical cancer. Question number 11 देखेंगे. Question 11, what is the diagnosis of a patient who presents with primary amenorrhea, absent uterus, scant pubic hair, well developed breast and clitoromegaly? तो क्या क्या बोल रहे हैं? Primary amenorrhea with absent uterus absent, with scant pubic hair with well developed breast along with clitoromegaly. इसकी डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस ऑप्शन 1, पार्शियल AIS, partial androgen insensitivity syndrome. Option 2, complete AIS, complete androgen insensitivity syndrome. Option 3, Turner syndrome. Option 3, Turner syndrome. Option 4, Mullerian agenesis. Option 4, Mullerian agenesis. फिर से देखिए, primary amenorrhea with absent uterus with scant pubic hair with well developed breast with clitoromegaly. डायग्नोसिस क्या है? partial AIS, complete AIS, Turner syndrome या Mullerian agenesis.
एंड द राइट आंसर इज ए, पार्शियल AIS। ये केस है पार्शियल AIS का। थैंक यू।